see these two. In the test cricket match between India-Pakistan, runs made by Indian batsmen in their first innings are given below. Write the answers to the questions on the basis of it. इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो टेस्ट क्रिकेट था, इसी के आधार पर इंडियन बैट्समैन ने जितने इनिंग्स लिए और यहाँ पर आपको दिया है और उसके आधार पर नीचे दिया हुआ सवालों के आंसर देना है. सो लेट्स सी हियर. प्लेयर रन्स. विराट 96 रन, शिखर 90 रन, रोहित 89 रन, सुरेश 38 रन, धोनी 47 run. So here it is, Virat is out of 96 runs. Here, didn't the score a century? क्या उसने एक सेंचुरी नहीं जीत लिया? Now answer these questions according to the scores given. Question number 1, who scored the highest runs? इसमें से सबसे ज़्यादा स्कोर किसने लिया? So विराट ने लिया है. So write the answer here, Virat. And how many? It is 96. Then who scored the lowest runs? सबसे कम runs किसने लिया है? धोनी. Write the answer here, Dhoni. Then how many? It is 47. So write the answer 47 here. How many runs did Virat need to complete a century? एक सेंचुरी होने के लिए विराट को कितना रन्स की जरूरी था? So एक सेंचुरी बोलने में 100 होते हैं, तो विराट की टोटल मिला है 96 runs. So you take the white paper and minus it. 100 minus 96. So here it is 0, 9 and 10. 10 minus 6 is equal to 4. 9 minus 9 is equal to 0. So the answer is 0. So you write the answer here 4. Now next, how many total runs are made by Dhoni and Suresh? धोनी और सुरेश दोनों मिलके कितना रन्स लिया? टेक द वाइट पेपर. सो सुरेश ने 38 रन्स को बनाया और धोनी ने 47 रन्स को बनाया. सो एड इट. 7 plus 8 is equal to 15 and 1 carry over. 5 is written here. 3 plus 1 is equal to 4 plus 4 8. So the answer is 85. So you write the answer here 85. Now fifth question, how many runs did Rohit need to complete a century? एक सेंचुरी होने के लिए रोहित को कितने रन्स की जरूरी? So 1 century means that is 100 and we minus the run made by Rohit. Rohit made 89 runs. 89 runs. So minus it here again. It is 10 minus 9. That is 1. 10 9 minus 1 8 is 1. It is 0. Then the answer is 11. So write the answer 11 here. How many runs did Suresh need to complete 50? That is half century. Half century बोलने में 50 होते हैं, तो सुरेश को हाफ सेंचुरी या 50 रन्स बनाने में कितने रन्स की जरूरी है? So write the 50 here minus and सुरेश ने 38 रन्स को बनाया. 38. So minus from 50 is 10 and here it is 4. And from 10 we minus 8. So that is 2, and from 4 we minus 3, that is 1. So the answer is 12. Write the answer here 12. Now question number 7.
Is the total runs made by Dhoni and Shikhar more or less compared to total runs made by Virat and Suresh? How many? So पर ये सवाल पूछा है, धोनी और शिखर ने जितने रन्स बनाया उसकी तुलना करने में विराट और सुरेश ने जितना रन्स बनाया उसी के वो ज़्यादा है या कम है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख लेना। सबसे पहले धोनी और शिखर ने कितना रन्स बनाया। धोनी ने बनाया है 47 रन्स एंड शिखर ने बनाया है 90 रन्स। सो एड दिस बोथ 7 plus 0 is 7, 9 plus 4 is equal to 13. So the answer is 13. Then विराट ने कितना रन बनाया देख लीजिए। विराट ने 96 रन बनाया है और उसके साथ हमें ऐड करना है सुरेश का रन। सुरेश ने 38 रन्स बनाया। सो हम देखेंगे 6 plus 8 is equal to 14 and 1 carry over 9 plus 1 is equal to 10 and plus is 3. So it is 13. So you look at the answers here. धोनी ने और शिखर ने दोनों मिलकर 137 रन्स बनाया और विराट और सुरेश दोनों मिलकर 134 रन्स बनाया। अभी हम इससे माइनस करेंगे 137 minus 134. So add this minus 7 minus 4 is equal to 3, 3 minus 3 0 and 1 minus 1 is equal to 0. So the answer is 3. So is the total runs made by Dhoni and Shikhar more or less compared to total runs made by Suresh? So it is more. Dhoni and Shikhar ने ज़्यादा runs बनाया. So we write it more here. And it is how many runs they made. The answer is here 3. सुरेश और विराट के रन्स के सामने धोनी और शिखर ने ज़्यादा रन्स बनाया है और 3 रन्स ज़्यादा बनाया है। Now question number 8. How many players scored runs more than 80? 80 से ज़्यादा कितने प्लेयर्स ने रन्स को बनाया? So let's see here. Here it is 96, that is more than 80, and here it is 90, that is also more than 80, and here it is 89, that is also more than 80. So 30 is less than and 47 is also less than. So 1, 2, 3. 3 players made more than 80 runs. Now how many players scored runs less than 50? 50 से कम कितने players ने runs लिया? Here it is 38 and 47. So we answer is the 2 players made runs less than 50. Question number 10. How many runs did Dhoni need to complete a half century? So you know the half century means it is 50. So धोनी ने बनाया है 47 runs. So we minus the 47 from the 50. So here it is 4 and here is 10. So from 10 it is 7 is minus, then the answer is 3, and 4 minus 4 is 0. So we need 3 runs. Dhoni need to complete a half century. Now write the following numbers in words. So all of you know us how to write the numbers. So here it is 169. So you write 1,
100, 69, and here it is 145. So write the answer 100, 45. So in the same way you complete all these numbers writing in words. Now let's go to a new page. For write the following numbers in figures. ये जो numbers दिया है यहाँ पे words में, इसको आपको figure में लिखना है. मैं एक दो examples आपको बताऊंगा. 113, that is 113. So the 2, 160. So you write the answer here 160, and all these other numbers you write by yourself. Now expand the numbers given below. ये जो नीचे दिया हुआ numbers को आपको expand करना है. So यहाँ पे it is 117. So you write 100 and 1 tens and 7 ones. Here it is again 100, 3 tens and 4 ones. Here it is 6 exercise. Write the figures for the expanded forms given below. नीचे दिया हुआ जो expanded forms है उसके numbers लिखना है. So here it is 100. So you write 1 here and 4 tens. That is 40 and 5 ones. 45. So the answer is 145. Number 2, 100, 3 tens, that is 30 and 7 ones. 7. So 137. Do all the other answers by yourself. Here number 7. Write the place value of each digit in the numbers given below. नीचे दिया हुआ numbers की place value लिखना है. So you write here it is 1, that is 100. 100 place value क्या है उसकी 100. और next तो 30 क्या होता है 30 tens होता है. 10 30 tens and 5 ones. So again you write here 100 होता है. 100, 100, then 0 tens, 0 tens, then 7 ones. So in the same way complete all other answers doing by yourself.